in proc SQL contain two statements. One statement is proc SQL and another statement is like a select statement. So proc SQL means procedure SQL structured query language and with semicolon. In select statement, what we can do, we can write the multiple clause like a select clause, where clause, and from clause, and outer by clause, having clause, group by clause. So we in select statement we can write the multiple clause. So at the end, what we are writing? We are writing the quit. So at the end of procedure, you must submit another program or like a proc step, data step, or quit statement you can write. So if you are not writing, when you have submitted the proc SQL step without ending it, so status what will display the message like a proc SQL running. Okay. So we'll see the basic programming, like how we can write the program in SQL. So here you can see like a proc SQL, and here select statement, select star, whatever variable you want to select, then you have to mention over here. What I'm doing, I'm just copying all variable from my existing data. For example, I'm just copying this data. I'm using the SAS help class data. So class data, so in class data, you can see there is a 5 variable: name, sex, age, height, and weight. So what I'm doing, I'm just copying all variable from class data. From means here we have to write the library name and dataset name. SAS dot class and quit. So यहाँ पे select statement लिखा मैंने, proc statement लिखा and quit statement. And यहाँ पे मैंने एक clause दिया from clause. This one. Says help. Now you can see my data is generated in result window. All 5 variable: name, sex, age, height, and weight. अभी in case मुझे सारे वेरिएबल नहीं चाहिए, I want only name, age, and height variable in output. So just want to select a statement, specify the column to be selected. जो भी वेरिएबल आपको select करना है, then you have to mention here and select clause. So block SQL and select which variable. जब एस्ट्रिक लगेगा तो वहां पे सारे वेरिएबल सिलेक्ट होंगे. यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, मुझे नेम चाहिए, कॉमा, एज, कॉमा, हाइट from SAS help dot class and quit. Now you can see, like in select statement, I have mentioned name, age, and height. तो मेरे आउटपुट में नेम, एज, हाइट वेरिएबल ही आए हैं, बाकी के वेरिएबल नहीं आए, राइट? तो जो भी स्पेसिफिक वेरिएबल हमें चाहिए, then we can write in select statement, or we can say that we can write in select statement, select clause. So we have to mention in select clause. Another एक और देखते हैं, जहां पे मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे एज ग्रेटर देन 12 चाहिए. सो वी विल सी द पेयर क्लॉज. proc SQL select
name, age, height from SAS help dot class where age greater than 12. Quit. So now you can see हमने data subset किया. So where statement basically used for subset the data based on one or more condition. So here I am applying the one condition. So where I'm just considering age should be more than 12. So now you can see जो भी output में मेरी age है वो उनका ही data आया है जिनका age greater than 12 है. So we will see the syntax part. So proc SQL select clause inside the select clause you can write the variable name and variable to second and third and we can say the column name column 1 column 2 column 3 जितने भी column चाहिए then you have to mention over here and from जहां से मुझे data चाहिए and then quit. सो एक और ये वाली कंडीशन देखते हैं जहां पे मुझे कॉलम को रीनेम करना है. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नेम है मैं नेम को पूनम रीनेम कर रही हूँ. तो proc SQL select name age height from SAS help dot class where age greater than is equal to 12 and मैं दो कंडीशन डाल रही हूँ. दूसरा नेम इज इक्वल टू नहीं नेम नहीं एक और वेरिएबल ले रही हूँ मैं 6 is equal to female. Wait. Now you can see this data name variable is rename as a Poonam. मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रीनेम किया तो अभी आप देख सकते हो एज ए स्टूडेंट. सो हमने यहाँ पे सेलेक्ट क्लॉज देखा फ्रॉम क्लॉज देखा एंड वेयर क्लॉज देखा. ऑर्डर बाय बेसिकली क्या करता है short the rows that is query returned by the variable or of the specified column. So in case मुझे data short करना है for example मेरे पास ये output आया but आप देखिए यहाँ पे 13 13 14 15 14 15 ये मुझे शॉर्ट करना है तो मुझे ऑर्डर बाय क्लॉज देना पड़ेगा. proc SQL select मैं दे रही हूँ नेम एज sex and height from SAS help dot class where age same condition दे रही हूँ greater than 12 and sex is equal to female. order by age.
Now you can see order by age. तो age जितना है वो ascending format में आया है. इन केस ये मुझे डेटा शॉर्ट करना है डिसेंडिंग फॉर्मेट में, उस टाइम पे मैं यहाँ पे लिखूंगी DESC, तो एज मेरा डिसेंडिंग फॉर्मेट में आएगा. राइट, 15 15 14 14 13 13. इन केस अभी आप देख रहे हो कि जो भी आउटपुट है वो मेरा रिजल्ट विंडो में दिख रहा है, मुझे वो वर्क लाइब्रेरी में सेव करना है. इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, राइट द प्रोग्राम proc SQL. यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट करूँ, क्रिएट टेबल नेम class 1 as, select all from says help dot class where age greater than 12 and sex is equal to male. Order by age. Wait. Create table. So now you can see that is not saved. So here what we are doing, create table class 1 as. Now you can see my data is saved in work library. That name, sex, male, and by age, shorted in descending format, height and weight.